Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to Super Intellectual School. My name is Kishwar and I will teach you maths. I hope you will enjoy learning maths with me. Before we start our lecture, we have to recite dua. So repeat after me. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह आमीन. Grade 2, open your maths book, unit number 1, and the unit name is whole numbers. Today we are going to discuss comparison of 3-digit numbers. पहले हमने कंपैरिजन ऑफ 2-digit नंबर पढ़ा था और अब हम कंपैरिजन ऑफ 3-digit नंबर पढ़ेंगे. In this topic we will discuss that comparison of 3-digit numbers, how we compare 3-digit numbers with each other. हम 3-digit numbers को कैसे एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, यूजिंग ऑफ ग्रेटर देन साइन एंड लेस देन साइन. ग्रेटर देन साइन के बारे में भी पहले हम पढ़ चुके हैं कि ओपन माउथ हमेशा ग्रेटर नंबर की तरफ होता है, वेदर इन स्मॉलर देन साइन और इन ग्रेटर देन साइन. ग्रेटर देन साइन हो तब भी हमारे पास ओपन माउथ साइन का किस तरफ होगा, ग्रेटर वैल्यू की तरफ, ग्रेटर नंबर की तरफ. और स्मॉलर देन साइन हमारे पास हो तो तब भी साइन का ओपन माउथ किस तरफ होगा, ग्रेटर नंबर की तरफ होगा. ठीक है, यूजिंग ऑफ ग्रेटर देन साइन, दिस इज द greater than sign, and less than sign, and this is the less than sign. Now moving to the next one, comparison of 3-digit numbers. When we compare 3-digit numbers, we first compare the digits on hundreds place. 3-digit numbers में हमें पता है कि हमारे पास 3-digit numbers होते ही hundreds में है. ठीक है, और the smallest 3-digit number is smallest 3-digit number is 100. So 3-digit number starts कहाँ से हो रहे हैं, 100 से. So जब भी हम numbers को 3-digit numbers को compare करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले hundreds की प्लेस पे जो digits हैं हम उनको compare करते हैं. hundreds की प्लेस पे हमारे पास जो भी डिजिट्स होते हैं हम उनको सबसे पहले एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं. ठीक है, when we compare 3-digit numbers, we first compare the digits on hundreds place. If the digits are same on the hundreds place, अगर hundreds की प्लेस पे दोनों, अगर आपके पास 3-digit numbers, दो 3-digit numbers हैं और दोनों 3-digit numbers में hundreds की प्लेस पे आपके पास सेम numbers हैं, सेम digits हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 137 और एक नंबर आपके पास है 198. सो हमारे पास 198 में भी hundreds की प्लेस पे 1 है और 137 में भी hundreds की प्लेस पे 1 है. सो हम hundreds की प्लेस को स्किप करके, क्विट करके हम टेंस की प्लेस को चेक करेंगे. फिर कि टेंस की प्लेस पे हमारे पास डिजिट्स सेम है या डिफरेंट है. फिर हम टेंस की प्लेस के अकॉर्डिंगली डिजिट को, नंबर को कंपेयर करेंगे, नंबर को चेक करेंगे. If the digits are same on hundreds place, then we compare the digits on tens place and will decide which number is greater and greater than and less than. टेंस की प्लेस पे जैसे मैंने आपको 2 नंबर्स की एग्जांपल दी, 137 एंड 198. सो 198 और 137 में हमारे पास hundreds की प्लेस पे तो डिजिट
वन सेम है, बट वन टेंस की प्लेस पे हमारे पास 137 में थ्री है, डिजिट थ्री है, और 198 में हमारे पास नाइन है, डिजिट नाइन है. सो टेल मी, थ्री इज ग्रेटर और नाइन इज ग्रेटर? 9 is greater. So 198 is greater than 137. So हमने टेंस की प्लेस के अकॉर्डिंगली फिर नंबर को जज कर लिया, नंबर को कंपेयर कर लिया. So हमने डिसाइड कर लिया that 198 is greater than 137. So हंड्रेड्स की प्लेस पे अगर डिजिट सेम होंगे तो हम टेंस की प्लेस पे जो डिजिट्स होंगे उनको कंपेयर करेंगे. ठीक है. नाउ इफ द डिजिट्स आर सेम ऑन टेंस प्लेस, अगर हंड्रेड्स की प्लेस पे भी डिजिट सेम है और टेंस की प्लेस पे भी डिजिट सेम हो, तो फिर हम क्या करेंगे? देन वी कंपेयर द डिजिट्स ऑन वंस प्लेस. फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास हंड्रेड्स की प्लेस पे भी सेम डिजिट है और टेंस की प्लेस पे भी दोनों नंबर्स में सेम डिजिट्स हों, तो फिर हम क्या करेंगे? वी मूव टू द डिजिट्स ऑन टेंस प्लेस. फिर हम मूव कर जाएंगे जो उन डिजिट्स पे जो वंस की प्लेस पे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास नंबर है 140 एंड 144, 140 और 144 में हंड्रेड्स की प्लेस पे भी सेम डिजिट है वन, और 140 में और 144 में टेंस की प्लेस पे भी सेम डिजिट है फोर. 140 में फोर है टेंस की प्लेस पे, और 144 में भी डिजिट फोर है टेंस की प्लेस पे. सो हंड्रेड्स की प्लेस पे भी डिजिट सेम है और टेंस की प्लेस पे भी डिजिट्स सेम है. फिर हम क्या करेंगे? वंस की प्लेस पे जंप करके हम वंस की प्लेस के अकॉर्डिंगली नंबर्स को जज करेंगे. सो 140 में हमारे पास वंस की प्लेस पे कौन सा डिजिट है? जीरो. और 144 में हमारे पास वंस की प्लेस पे कौन सा डिजिट है? फोर. सो 144 is greater number because 4 is greater than 0. So 144 is greater than 140. So जब हमारे पास हंड्रेड्स की प्लेस पे भी डिजिट सेम हो और टेंस की प्लेस पे डिजिट सेम हो, तो हम वंस की प्लेस पे जंप करके वहां पे नंबर्स को, डिजिट्स को कंपेयर करेंगे और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली जज करेंगे कि डिसाइड करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन है और कौन सा नंबर लेस देन है. और अगर हंड्रेड्स की प्लेस पे, वंस की प्लेस, टेंस की प्लेस पे और वंस की प्लेस पे तीनों प्लेसेस पे सेम डिजिट हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक नंबर है 166 और दूसरा नंबर भी आपके पास 166 है. सो हमारे पास हंड्रेड्स की प्लेस पे वन है, टेंस की प्लेस पे दोनों नंबर्स में सिक्स है, और वंस की प्लेस पे भी दोनों नंबर्स में सिक्स ही है. सो ये नंबर हमारे पास इक्वल नंबर होगा. ठीक है. कोई भी दोनों नंबर्स में से कोई भी नंबर ग्रेटर देन नहीं होगा और कोई भी नंबर स्मॉलर देन नहीं होगा. ठीक है. अगर आपके पास थ्री डिजिट नंबर में तीनों प्लेसेस पे, हंड्रेड्स की प्लेस पे, टेंस की प्लेस पे और वंस की प्लेस में सेम डिजिट हो, तो फिर हमारा नंबर सेम होगा. ठीक है. Now moving to the next one. Here's your book page, comparison of three digit number. टॉपिक हमारा यही है. The smallest three digit number is 100. I have already told you that 100 is the smallest one three digit number and 999 is the greatest three digit number. ठीक है. ये हम सबसे पहले हमारा लेक्चर क्लासरूम में हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बता चुकी हूँ that 0 is the smallest one digit number and 9 is the greatest one digit number. 10 is the smallest two digit number and 99 is the greatest two digit number. And 100 is the smallest
3-digit number, and 999 is the greatest 3-digit number. So ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं. अब कंपैरिजन ऑफ 3-digit नंबर्स में पे आ जाते हैं. कंपेयर विच नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर. अब हमने ऊपर जो रूल्स पढ़े हैं कंपैरिजन ऑफ 3-digit नंबर्स के, हम उन रूल्स के अकॉर्डिंगली इन नंबर्स को जज करेंगे, इन नंबर्स को कंपेयर करेंगे. ठीक है. कंपेयर विच नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर. Here we have two numbers, 874 or 567. Hundreds place, tens place, and ones. Hundreds, tens, and ones. Here we have number 874, and then we have number 567. So सबसे पहले हमने क्या करना है, हंड्रेड्स की प्लेस पे दोनों नंबर्स में हम डिजिट्स को चेक करेंगे. In 874 we have digit 8 on hundreds place, and in 567 we have digit 5 on hundreds place. So tell me that 8 is greater or 5 is greater. 8 is greater. So we can say that 874 is greater than 567. हमने हंड्रेड्स की प्लेस पे डिजिट्स को चेक किया और हमारे पास एक नंबर में हंड्रेड्स की प्लेस पे ग्रेटर डिजिट है और एक नंबर में हमारे पास हंड्रेड्स की प्लेस पे स्मॉलर डिजिट है. तो हमने इन हंड्रेड्स की प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनसे ही ये डिसाइड कर लिया है that 874 is the greater number. So compare the digits in the hundreds place. 8 is greater than 5. 8 is greater than 5. इसको हम 8 is greater than 5 ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं with sign. So 874 is greater number is greater than 567. 874 is greater than 567. So ये हमने हंड्रेड्स की प्लेस पे जो डिजिट्स हों हम उनका कंपैरिजन करके हम कैसे ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने ये लर्न कर लिया है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. हियर इज योर बुक पेज. Comparison of numbers. Compare the numbers using smaller than sign and greater than sign. Here we have two numbers. We have to compare these two numbers with each other. ठीक है. Here we have number 219 and then another number 342. First we have to compare the digits on hundreds place. In 219 we have digit 2 on hundreds place, and in 342 we have digit 3 on hundreds place. So tell me 2 is greater or 3 is greater. 3 is greater, which means 342 is greater number and 219 is smaller number. बट स्टेटमेंट को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से कभी भी स्टेटमेंट को रीड आउट नहीं करते. सो स्टेटमेंट को हम रीड आउट करेंगे दैट 219 इज लेस देन 342. लेस देन का साइन यहाँ पे डालेंगे और लेस देन का साइन कौन सा है, दिस वन. लेस देन का साइन जब हम डालेंगे यहाँ पे पुट करेंगे तो लेस देन के साइन में ओपन माउथ ग्रेटर नंबर की तरफ होगा, तो 219 is less than 342. Now moving to the next one. Here we have another number 267 and 157.
In 267 we have digit 2 on hundreds place, and in 157 we have 1 digit 1 on hundreds place. So tell me, 2 is greater or 1 is greater? 2 is greater. So we can say that 267 is greater number and 157 is smaller number. So statement को read out कैसे करेंगे? 287 is greater 267 is greater than 157. और यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन साइन. कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन साइन. और ग्रेटर देन साइन कौन सा है? दिस वन. ग्रेटर देन साइन कौन सा है? दिस वन. और ग्रेटर देन साइन में भी ओपन माउथ, साइन का ओपन माउथ किस तरफ आएगा? ग्रेटर वैल्यू की तरफ. ग्रेटर वैल्यू की तरफ. ओपन माउथ ग्रेटर वैल्यू की तरफ आएगा. स्टेटमेंट को हम रीड आउट करेंगे. 267 इज ग्रेटर देन 157. Now moving to the next one, here we have another number 384 and 492. So here we have in 384 we have digit 3 on hundreds place, and in 492 we have digit 4 on hundreds place. So tell me, 4 is greater or 3 is greater? 4 is greater, which means 492 is greater number and 384 is smaller number. So statement को read out हम left side से start करेंगे. left hand side से 384 is less than 492. 384 is less than 492 और less than का साइन यहाँ पे पुट करेंगे. less than का साइन कौन सा है? this one. So 384 is less than 492. ओपन माउथ साइन का ग्रेटर वैल्यू की तरफ आएगा. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. Here we have two numbers 637, 633 and 589. 633 and 589. First we compare the numbers on digits on hundreds place. In 633 we have digit 6 on hundreds place, and in 589 we have digit 5 on hundreds place. So tell me, 6 is greater or 5 is greater? 6 is greater. So we can say that 633 is greater than 589. लेफ्ट साइड से स्टेटमेंट को रीड आउट करना स्टार्ट करेंगे. 633 is greater than 589 और ग्रेटर देन साइन यहाँ पे दिस वन पुट करेंगे यहाँ पे और स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो जाएगी. 633 is greater than 589. Now moving to the next one. Here we have number 809 and 929. Again we have to compare the numbers, the digits on hundreds place. Here we have digit 8 on hundreds place, and here we have in this number digit 9 on hundreds place. So tell me, 9 is greater or 8 is greater? 9 is greater, which means 929 is greater number and 809 is smaller number. But left side से हम statement को read out करेंगे. तो हम read out कैसे करेंगे? 809 is less than 929. 929 और यहाँ पे हम लेस देन का साइन पुट करेंगे, एंड लेस देन का साइन ये वाला है. और लेस देन के साइन में भी हमारे पास साइन का ओपन माउथ किस तरफ आएगा? ग्रेटर वैल्यू की तरफ, ग्रेटर नंबर की तरफ. सो 809 is less than 929. Now moving to the next one. Here we have number 790 and 690. In 790 we have digit 7 on hundreds place, and in 690 we have digit 6 on hundreds place. So tell me, 7 is greater or 6 is greater? 7 is greater. So we can say that 790 is greater than
790. 690. 790 is greater than 690. यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन का. दिस वन, दिस वन. और साइन का ओपन माउथ हमेशा ग्रेटर वैल्यू की तरफ आएगा. ठीक है. 790 is greater than 690. Now moving to the next one. Comparison of three digit numbers. Firstly हमने क्या पढ़ा था कि कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में जब हम हंड्रेड्स की प्लेस पे डिजिट्स को कंपेयर करते हैं. अब हम क्या पढ़ने लगे हैं, अब हम क्या डिस्कस करने लगे हैं कि अगर हंड्रेड्स की प्लेस पे डिजिट्स सेम हो, हंड्रेड्स की प्लेस पे डिजिट्स सेम हो बोथ नंबर्स में, दोनों नंबर्स में हंड्रेड्स की प्लेस पे डिजिट्स सेम हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हम टेंस की प्लेस के अकॉर्डिंगली डिजिट्स को कंपेयर करेंगे. ठीक है. हियर वी हैव नंबर 348 और 397. 348 और 397. 100 tens ones. 100 tens one. We have number 348 and then we have a number 397. We have in both numbers same digits on hundreds place. Both numbers में हमारे पास क्या है, hundreds की place पे same digits है 3 3. अब हम क्या करेंगे, मूव करेंगे टेंस की प्लेस पे डिजिट्स को. ठीक है. टेंस की प्लेस पे कंपेयर करेंगे डिजिट्स को. नाउ हियर वी हैव in 348 we have 4 on tens place, and in 397 we have 9 digit 9 on tens place. So tell me, 9 is greater or 4 is greater? 9 is greater, which means 397 is the greater number and 348 is smaller number. बट हम स्टेटमेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से रीड आउट करते हैं. सो हम क्या करेंगे, 348 इज लेस देन 397. फर्स्ट कंपेयर द डिजिट्स इन द हंड्रेड्स प्लेस. हंड्रेड्स की प्लेस पे डिजिट्स को चेक किया, दोनों नंबर्स में हमारे पास हंड्रेड्स की प्लेस पे सेम डिजिट्स थे 3 3. दे आर द सेम. So we will compare the digits in the tens place. हमने क्या किया है, tens की place पे digits को compare कर लिया. We will compare the digits on in tens place. 4 is less than 9. 4 is less than 9. I.e. 4 is less than 9. So 348 is less than 397. So हमारे पास क्या है, नंबर 348 is less than 397. Now moving to the next one. Comparison of three digit numbers. Here we have your book page. Compare the numbers using smaller than sign and less than sign or greater than sign. Here we have two numbers, 197 and 142. In both the numbers we have same digits on hundreds place. We have same digits on hundreds place. In 197 we have 1, and in 142 we have digit 1 on hundreds place, which are the same. So we have to move on hundreds tens place. So in 197 we have digit 9 on tens place, and in 142 we have 4 is on tens place. So 9 and
4. So tell me, 9 is greater or 4 is greater? 9 is greater. So 197 is greater than 142. We have to put greater than sign here, and greater than sign is this. You have to put this sign here. और स्टेटमेंट को हम रीड आउट हमेशा लेफ्ट साइड से करना स्टार्ट करते हैं. 197 is greater than 142. Now moving to the next one. Here we have another number 367, and then we have 371. In both numbers we have same digits on hundreds place. In this number we have digit 3, and in this number we have also digit 3. So hundreds की प्लेस पे सेम डिजिट्स हैं, सो हम मूव करेंगे टेंस की प्लेस पे. ठीक है. In 367 we have digit 6 on tens place, and in 371 we have digit 7 on tens place. So can you tell me which one is greater? 7 is greater or 6 is greater? 7 is greater. So 371 is greater number and 367 is smaller number. लेफ्ट हैंड साइड से स्टेटमेंट को रीड आउट करना स्टार्ट करेंगे. तो कैसे करेंगे? 367 is less than 371. यहाँ पे आप लेस देन का साइन पुट करेंगे, और लेस देन का साइन कौन सा है? दिस वन. 367 is less than 371. Now moving to the next one. Here we have two numbers, 884. 884. Then we have 802. Now in 884 we have a digit 8 on hundreds place, and in 802 we have digit 8 on hundreds place. So both numbers में हमारे पास hundreds की place पे सेम डिजिट है. सो हम क्या करेंगे? टेंस की प्लेस पे मूव करेंगे. In 884 we have digit 8 on tens place, and 802 we have digit 0 on tens place, which means 884 is greater than 802, because 8 is greater than 0. 8 is greater than 0 na. So 884 is greater than 802. Now moving to the next one. 653. 653. And another number we have 689. 689. In both numbers we have digit 6 on tens on hundreds place. So we have to move on tens place. In 653 we have digit 5 on tens place, and in 689 we have digit 8 on tens place. So tell me, 8 is greater or 5 is greater? 8 is greater. So we can say that 653 is less than 689. 689. You have to put this sign here, and you have to read this statement like this. 653 is less than 689. Now moving to the next one. Here we have two numbers, 909 and 919. In 909 we have digit 9 on hundreds place, and in 919 we have digit 9 is on hundreds place. So both the digits on hundreds place are same. Now we have to move on tens place. In 909 we have 0 on tens place, and in 919 we have 1 on tens place. So tell me, 0 is greater or 1 is greater? 1 is greater. So स्टेटमेंट को हम रीड आउट लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे. तो कैसे करेंगे? 909 is less than 919. 909 is less than 919. So you have to put this sign here.
909 is less than 919. Now moving to the next one. Here we have two numbers, 441 and 414. In both the numbers we have same digits on hundreds place, so we have to compare the digits on tens place. In 441 we have digit 4 on tens place, and in 414 we have digit 1 on tens place. So tell me, 4 is greater or 1 is greater? 4 is greater. So we can say that 441 is greater than 414. 414. So statement को read out करेंगे. 441 is greater than 414. A greater than sign, this one is the greater than sign. You have to put this sign here, and you have to read the statement like this: 441 is greater than 414. Now moving to the next one. Comparison of three-digit numbers. Now here we have two numbers, 573 or 571. 573 और 571. यहाँ पे हम अब थर्ड रूल के बारे में पढ़ना लर्न करना स्टार्ट करेंगे कि अगर हमारे पास दोनों नंबर्स में हंड्रेड्स की प्लेस पे डिजिट सेम हो और टेंस की प्लेस पे भी डिजिट सेम हो, तो फिर हम क्या करेंगे, नंबर्स को कैसे कंपेयर करेंगे? हंड्रेड्स, टेंस, वंस. हंड्रेड्स, टेंस, वंस. We have number 573 and 571. We have digit 5 on hundreds place in 573, and we have digit 5 on hundreds place in number 571, and then we have digit 7 on tens place in number 573, and then we have digit 7 on tens place in number 571. So we have the same numbers on hundreds place in both the numbers, and we have same digits on tens place in both the numbers. First compare the digits in the hundreds place. They are the same. Now compare the digits in the tens place. They are also the same. So we will compare the digits in the ones place. हम क्या करेंगे, ones की place पे digits को compare करेंगे. In 573 we have digit 3 on ones place, and in 571 we have digit 1 on ones place. So tell me, 3 is greater or 1 is greater? 3 is greater, which means 573 is greater than 571. So we will compare the digits in the ones place. 3 is greater than 1. 3 is greater than 1. So 573 is greater than 571. Now moving to the next one. Here's your book page. Comparison of three-digit number. Compare the numbers using less than sign or greater than sign. Here we have numbers 349 and 346. In both the numbers we have same digits on hundreds place. In 349 and 346 we have digit 3 on hundreds place. Then we have the same digits on tens place also. In 349 we have digit 4 on tens place, and in digit 346 we have digit 4 on tens place. So in hundreds place and tens place we have same digits. So now we have to compare the digits on ones place.
So in 349 we have digit 9 on tens on ones place, and in 346 we have digit 6 on ones place. So tell me, 9 is greater or 6 is greater? 9 is greater, which means 349 is greater than 346. So you have to put greater than sign here, and you have to read this statement like this: 349 is greater than 346. Now moving to the next one. Here we have number 565 and 568. On hundreds place we have same digit 5, and on tens place we have the same digits on tens place. In both the numbers we have same digit 6 on tens place in both the numbers. So we have to compare the digits on ones place. So in 565 we have digit 5 on ones place, and in 568 we have digit 8 on ones place. So tell me, 8 is greater or 5 is greater? 8 is greater. So we have to read this statement like this: 565 is less than 568. You have to put this sign here. Now moving to the next one, 909 and 905. In both the numbers we have same digits on hundreds place, and we have same digits on tens place. So now you have to compare the digits on ones place. In 909 we have digit 9 on ones place, and then we have 9 in 905 we have digit 5 on ones place. So tell me, 9 is greater or 5 is greater? 9 is greater. So we can say that 909 is greater than 905. Now moving to the next one. Here we have number 601 and 609. In both the numbers we have same digits on hundreds place, 6 6, and we have same digits on tens place, 0 0. So we have to compare the digits on ones place. In 601 we have digit 1 on ones place, and in 609 we have digit 9 on ones place. So tell me, 9 is greater or 1 is greater? 9 is greater. So we have to read the statement like this: 601 is less than 609. So you have to put this sign here, and you have to write you have to read this statement like this: 601 is less than 609. Now moving to the next one. Here we have 427 and 423. In both the numbers we have same digits on hundreds place, and we have same digits on tens place. 4 4 2 2. Now we have to compare the digits on ones place. In 427 we have digit 7 on ones place, and in 423 we have digit 3 on ones place. So tell me, 7 is greater or 3 is greater? 7 is greater. So we can say that 427 is greater than 423. You have to put this sign here, and you have to read this statement like this: 427 is greater than 423. Now moving to the next one, 780 and 789. In both numbers we have the same digits on hundreds place, and we have same digits on tens place. So you have to compare the numbers, the digits on hundred and ones place.
So here we have in 780 we have digit 0 on ones place, and in number 789 we have digit 9 on ones place. So tell me, 9 is greater or 0 is greater? 9 is greater. So we have to read this statement like this: 780 is less than 789. You have to put less than sign here, and you have to read this statement like this: 780 is less than 789. Now moving to the next one. Comparison of three digit numbers. Write and compare the numbers smaller than and greater than. Write and compare the numbers. Here we have a number in expanded form. This is the expanded form of a number. You have to write it in standard form. Then we have to compare the numbers. Okay? You have to put 3 here. Then you have to put 5 here. Then you have to put 7 here. So we have number 357. We will get number 357. And here we have number 300 plus 20 plus 2, which is the expanded form of a number. And we have number 322. 322. So you have to compare the numbers. In 357 we have digit 3 on hundreds place, and in 320 we have digit 3 on hundreds place. We have the same digits on hundreds place. And then we have digit 5 on, in 357 we have digit 5 on tens place, and then we have 320. In 322 we have digit 2 on tens place. So tell me, 5 is greater or 2 is greater? 5 is greater. So we can say number 357 is greater than 322. So you have to put this sign here. You have to write this sign here. Okay? 357 is greater than 322. Now move to the next one. Here we have number 200 plus 20 plus 2, which makes the number 222. Then we have a number 300 plus 20 plus 4, which makes the number 324. So we have to compare the digits on hundreds place first. पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हंड्रेड्स के प्लेस पे डिजिट्स को कंपेयर करेंगे. ठीक है, हंड्रेड्स की प्लेस पे हमारे पास 222 में कौन सा डिजिट है? डिजिट 2 है. और 324 में हमारे पास हंड्रेड्स की प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 3 है. So 3 is greater than 2. So which means 324 is greater number and 222 is smaller number. But we have to read the statement on left hand side. ठीक है, हम स्टेटमेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से रीड आउट करते हैं. तो हम कैसे इस नंबर को रीड आउट करेंगे, इस स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे? 222 is less than 324. So you have to write here less than sign. 222 is less than 324. You have to write this
sign here, and you have to read the statement like this: 222 is less than 324. Now moving to the next one, 464, and then we have a number 564. First, we have to compare the numbers on hundreds place. We have to compare the digits on hundreds place. Here we have in 464, we have digit 4 on hundreds place, and we have digit 5 in number 564. We have digit 5 on hundreds place. So tell me, 5 is greater or 4 is greater? 5 is greater, but we have to read out the statement from left hand side. So we will read this statement like this: 464 is less than 564. So you have to write this sign here, less than sign, and you have to read this statement like this: 464 is less than 564. Now moving to the next one. Here we have number 900 plus 80 plus 6, and then which makes a number 986. 986. Then we have a number 600 and 600 plus 90 plus 0, which makes 690, which makes a number 690. So in 986 we have digit 9 on hundreds place, and in 690 we have digit 6 on hundreds place. So tell me, 9 is greater or 6 is greater? 9 is greater. So we can say that 986 is greater than 690. So 986 is greater than 690. So you have to write this sign here, and you have to read the statement like this: 986 is greater than 690. Now moving to the next one. No, sorry, it's done. You have to do on your notebook and book as well. This is your homework. Do it on your notebook and book as well, because solution will be provided on WhatsApp group. Take care. Bye. Allah Hafiz.